Hi, everybody. Welcome to this wonderful YouTube live. Thank you so much for being here. Mo Srimay Mahapatra. I'm the founder of Odisha Digital Coaches Hub, a platform which is dedicated to help you improve your English communication skills, especially professional communication skills. So today I'm going to talk about something very, very, very important, especially in the world where ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି distract ହେଇଯାଉଛେ ବହୁତ ଗୁଡେ shiny object syndrome ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ distraction କୁ ପଳଉଛେ so in a world of very less focus and very less attention and reducing human interactions I think it is very important for us to understand कि कौन एमती 10टा कम्युनिकेशन टिप्स आमे जानी परिबा जोटा कि हमरो कोनोसी प्रकार रो भी रिलेशनशिप को बेटर करिकी रखिबो आपण माने जानि परथुवे कि बहुत उडे जगह रे आजिकली टेम्पररी रिलेशनशिप बहुत बढ़िलानी it's not bad to be in a temporary relationship for your pleasure but what is important is that କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ହାଇ ଇମୋସନ୍ସ ରେ ରହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଲୁଜ କରିବାକୁ ବି ଚାହିଁବେନି and you definitely want to keep the relationship active you want to give some sacrifices if needed because your heart will cry out to keep that person in your life if you are able to resonate ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ please do let me know 100% in the chat box in the comments right just give me one sec let me inform uh, yes one of my team members that I'm live so that he can tell everybody that I'm live okay so bandhugano we don't want to lose important people in our life can be very lonely and very sad if we don't have the correct person in our life and if we get the correct person we don't want to just break our relationship just because of some emotional trauma so communication has already been proven মানে এটা বহুত উড়ে research মানে all over the world whether it is London School of Business whether it is Harvard whether it is Princeton there has been so many studies so many surveys psychological the Myers and Briggs test and all of these बहुत उड़े जगह रे already एटा prove है सरची कि communication is one of the primary not even secondary or tertiary it is the primary reason why gote relationship re gote crack ase so aji mu apanku 10 टा टिप मु दउची जोडा कि मु not only निज लाइफ रे बहुत उडे एक्सपीरियंस कला बेले रियलाइज करची बट आल्सो ऑब्जर्व करिकी अन्य मानक लाइफ रे मु रियलाइज करची सो जदी आपण रेडी टू लर्न दीस 10 टिप्स ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट टाइप RTL in the chat box okay and let's deep dive okay so टिके आपण focus our attention देकी सुनंतु this can actually change your life forever okay so the first thing that I would like to talk about 10 evergreen communication principles in personal relationship okay the first thing let me start from point number 10 and point number 1 is the most important okay so mu 10 ru 1 को जिबी bottom up approach रखिबा number 10 why communication is so important is um, is because of a mindset जदि हमरो बारंबार गंडोल होउची किबा बारंबार किछि बुझामणा होउची then this is one of the reason we are not letting go of our past traumas okay so please communicate about your past traumas very clearly okay clearly communicate about your past traumas with your partner and when I'm talking about partner I'm not only talking about boyfriend and girlfriend or husband or wife সেটা তো definitely mu কথা হউচি but I'm also talking about any personal relationship it can be your friends it can be your brother sister so जो माने भी हमर अछंती लोक माने जो माने हम सहित क्लोज अछंती तांकू एटा जणेबा दरकार कि आपनकर गोटे पास्ट ट्रॉमा हितला and because of that
प्रथम तो रियलाइज करिया दरकार एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी आपणकर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द पर्सन और द एक्टिविटीज दैट यू डू विथ दैट पर्सन सेई अनुसारे मे बी केतरा जिंस आपण जज करिवे एई जिंसटा आपण क्लियरली कम्युनिकेट करंतु जेतेबेले से लोकटा जानिबो जदि आपण न जणेबे से जानि ही परिबोनी तो आपण एटा जणेया को चेष्टा करंतु कि मोर पास्ट रे एई सब जिनिस हेतिला एटा जदि आपण बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप रे जदि पूरा क्लैरिटी रखिबे ताहले आपण देखिबे कि से लोकटा आपण को कम मिसअंडरस्टैंड करिवो so that is the 10th reason if you got number 10 type got 10 in the chat box or in the comments I would love to see your comments ଆପଣଙ୍କର comments ଦେଖିଲେ ମତେ ବହୁତ encouraging ଲାଗେ and thank you so much for all to all of you who are really you know inclined towards our content ମୁଁ ବହୁତ appreciate କରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ comment କରନ୍ତି especially अमिल रायतांकर नाम ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଲବଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି मसनाଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରଲି କରନ୍ତି ସେଟା ମୋର ନଜରରେ ଆସେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆସେ so thank you so much to each and every one of you I'm really grateful to have you as my channel fans okay a content fan so coming back to point number 9 to make our relationships better is definitely being patient to consider good enough okay देखंतु आकु एम्पैथी भी मु कहि परिबी आकु एम्पैथी भी कहंती माने कोन आमे ना टिके पेशेंस रखिया को पड़िबो कि कोन कोन सिचुएशंस तार लाइफ रे हेथै पारे किबा वर्तमान रो को सिचुएशन से अछि instead of being impatient and demanding to get answers and to get responses from that person हमको टिके धैर्य सहित कंसीडर करिया पड़िबो कि से लोकटा को सिचुएशन रे वर्तमान रे अछि ता मुंडो रे कोन चली थाई पारे सेटा को टिके हमको धैर्य धरि की पेशेंसली बुझिया को पड़िबो आमे जदी केवल निजर डिमांड टाकू फुलफिल करिया को चेष्टा करिया आमे डिमांडिंग वेली हमरो हमको कुहा जिवो and one should not be so demanding in a relationship yes obviously there are some expectations that you need to set there is no doubt about it but say expectations jodi apan rakhuchandi tal taku clearly communicate karantu जदि आपण कंसीडर करू नाहंती से लोकटा को सिचुएशन रे अछि को जगह रे अछि कोन होउची ता सहित के अछि मे बी बिकॉज ऑफ दैट तार रिएक्शन आपण को पई किबा तार रेस्पॉन्स आपण को पई गोटे अलगा वे रे होउची सेटा गोटे बुझिया चेष्टा करंतु बी कंसीडरेट एनफ ताकू एम्पैथी वेली भी कहंती राइट फिटिंग इनटू द अदर पर्सन शू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड what the person might be going through तार इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड कोन अछि तार फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड कोन अछि तार एंजाइटी किबा टेंशन लाइफ रे कोन चलीची बिकॉज ऑफ व्हिच बेले बेले कोन हुए टेंशन गोटे चलीथिबो जनकर मुंड रे किंतु सिए सेटा को प्रकाश कर पर नथुओ माने एक्सप्रेस कर पर नथुओ इजीली काना सेटा बहुत भितरे तांकर चलीची राउंड 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 हे की मुंडरे बुलुची किंतु से माने सेटा को एक्सप्रेस कर पर नांदी से माने डरंती कि काळे मोर पार्टनर कोन कहिबो मते वीक वेली भाबिबो ऑल दिस थिंग्स दे थिंक ऑफ राइट किंतु कोन हुए इमोशंस केबे हेले आपण बेसी समय जे हाइड करिकि रखि परिबेनी केही मध्ये करि परंतनी तो कोन होबो सेटा केबे ना को रूप रे बाहर को आसीबो तो मे बी गोटे आपणकर जनकर जे भी आपणकर पार्टनर अछंती ताको आमे जदी एम्पैथाइज हेबा हमकु बुझिबा दरकार जदी एम्पैथी रखिबा ताहले आम मुंडरे गोटे एटीट्यूड रहइबो गोटे थॉट प्रोसेस रहइबो कि मे बी तारो आगुरु किछि गोटे टेंशन चलतिला एंड बिकॉज ऑफ दैट सी आजी इनती रिएक्ट कला सेटा सेतोले जणा पड़ नथिला एबे रिएक्ट कला दैट्स फाइन दैट्स ओके आपण कहबे कि सेतोले जतोले चलतिला मते कम पे कहिलोनी सेटा कम पे कहंतनी लोक माने बिकॉज वी डोंट गिव अपॉर्चुनिटी एंड वी डोंट encourage people to share everything with us and it's not just about encouragement it's about making them feel comfortable
ओके सो कंफर्टेबल हेले सिना से माने आम सहित सब शेयर करिवे किंतु आमे जदी डिमांडिंग हे जिवा एम्पथाइज न करिया कंसीडर न करिया ताले केमती हबो सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट 9 नंबर पॉइंट ओके माने 10 नंबर एडा मु कहली लेटिंग गो ऑफ पास्ट ट्रॉमास एंड communicating about your past. 9 नंबर पॉइंट हला कि being patient enough to consider कि कौन चलथिबो लाइफ रे. नंबर 8 हला क्लैरिटी जेते हे परिबो आपण क्लियर जिनिस टाकू कम्युनिकेट करिया चेष्टा करंतु आ क्लैरिटी आनिया को चेष्टा करंतु सीक क्लैरिटी फॉर एग्जांपल जदी किछि ओडे डिसीजन विषय डिस्कशन चलची ताहले कंफ्यूजन रु क्लैरिटी को किमिति मूव हे परिबा अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करंतु कम्युनिकेट टू शिफ्ट फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी आ एडा हबो केतोले बहुत जन लोक कंफ्यूजन रे रही आंती काना से माने छाडी दियंती दे गिव अप राइट से कहते कौन एत कथा हवा कौन एत बुझेवा ठीक अच्छे छाड़ जहाँ हला हला इमिति नहीं कंफ्यूजन को केबे रखंतुनी इट विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल ऑलवेज सीक क्लैरिटी कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली एनकरेज करंतु कि कौन हेची मते क्लियरली कहंतु कौन प्रॉब्लम हे थाई पारे राइट अच्छा आमे जो ए डिसीजन दा नौचे कौन पई सेटा आपण कौन पई सेई विषय कहिले टिके आपण क्लियरली तांकु पचारंतु क्लैरिटी को सीक करंतु दैट वाज पॉइंट नंबर 8 पॉइंट नंबर 7 टू maintain healthy relationship through communication is actively responding ओके सो एटा गोटे प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम होची सेटा कोन होची कि लोक माने किछि गोटे कहउचंती बट आमे मे बी सुनुचे भी बट आमे सेटा को ठीक रेस्पोंड करि परने आमे एक्नॉलेज करूने गोटे लोक कहि चलची आर लोकटा साइलेंट है कि खाली कहउची मे बी आपण टिके जदी ताकू रेस्पोंड करिवे माने इनक्लूड से जहा कहले ताकू समरी करी कि ताकू आउथरे टिके कहि देले हां हां तमे एडा कहउतलो ना तमे सेडा कहउतलो ना हां तमे एडा कहलो ना तो एई जो एक्टिव रेस्पॉन्स टा कम्युनिकेट कला बेले फोन रे हो व्हाट्सएप रे हो कि आमना सामना रे कथावार्ता हो ए एक्टिव रेस्पॉन्स टा आपण टिके रखंतु जदि आपण पूरा चुप हेकी बस पड़िवे आ निज मुंड रे सब चलथिवो आपण किछि कहउ नथिवे ताहले से लोकटा को भी खराब लगिवो से लोकटा बेसी आपण सहित शेयर करिवा बंद कर दबो पुनी आपण ही ताकू डाउट करिवा आ ता ऊपरे विभिन्न प्रकार रो प्रॉब्लम्स आपण को भितरे स्टार्ट हो सो प्लीज मेंटेन एक्टिव रेस्पॉन्स बहुत इंपोर्टेंट नंबर 6 हला अटेंटिव लिसनिंग एटा बहुत गुडे रिसर्च रे ऑलरेडी जना पड़ी कि लिसनिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई कम्युनिकेशन टर्न्स इनटू मिसकम्युनिकेशन I am not talking about hearing, I'm talking about listening, and I'm not just talking about listening to reply, I'm talking about being very paying lot of attention to listen so that you can respond. You don't listen or hear to reply, you need to listen or attentively listen so that you can respond. What is the difference between replying and responding? When you are replying something, you're only talking about what is there in your mind, you're not considering what the other person said. Response is when you reply as per the communication or the conversation that has already been happened from the other person. Whatever the other person said, you include that se point uda ko include kariki apno nijor expression ta ku misei ki gote answer deba ku kahanti responding, not replying. If you got this, type response in the comments below if you got this right. Sabu bele apno kebol nijo katha na koi ki तांकर सी कोन कहले सेई कथाटा को धरिकी तार समरी देकी ता पर निज कथा कहवा होची रेस्पॉन्स एबे आपण सेटा कहिबे केमती जदी आपनको पाखरे लिसनिंग नाही अटेंटिव लिसनिंग नाही सेतबे आपन दीटा कान दिया जाईची एंड गोटे पार्टी दिया जाईची देयर इज अ रीजन फॉर दैट ओके वी नीड टू लिसन मोर वी नीड टू ऑब्जर्व मोर एंड टॉक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट सो प्लीज बी एन वेरी अटेंटिव लिसनर. One of the biggest reasons of miscommunication is when this is not there. Number 5, top 5 को वर्तमान में आसीगलेनी. I hope you are paying attention. It is extremely important to clearly communicate your dreams and desires and encourage the other person to share
his or her dreams and desires in a personal relationship. चाहे से सांग हो कि भाई हो कि भौणी हो कि गर्लफ्रेंड हो कि हस्बैंड हो कि वाइफ हो, it is very important to clearly communicate dreams and desires. All right, so जहाँ भी आपणकर लाइफ रे एस्पिरेशन अच्छी, जहाँ भी आपण बनिया को चाहूचंती, जहाँ भी आपण चाकरी करिया चाहूचंती, को डेस्टिनेशन को जीवा चाहूचंती, जहाँ भी आपणकर ड्रीम्स एंड डिजायर्स अच्छी, ताको रेगुलरली कम्युनिकेट करंतु. जेते आपण कम्युनिकेट करिवे सामना वाला आपनको सेते बुझिबो, आ आपण एनकरेज करंतु तांकू, तांकर ड्रीम्स तांकर डिजायर सेति की एंथुसियाज्म सहित तांकू एनकरेज करंतु कि मते भी कहो ना कोन तमे ड्रीम्स देखिछो, व्हाट आर योर ड्रीम्स, व्हाट आर योर डिजायर्स, राइट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम. सो तांको भी भल लागिवो आपण सहित कथा पई. ड्रीम्स एंड डिजायर्स जेतोले ब्रेक हुए लाइफ रे बहुत पेन हुए. अग्री और डिसअग्री. जो आम गोटे ड्रीम रखा आ गोटे डिजायर रखा किंतु सेटा हमको मिलू नथुवो, बहुत वर्ष जाए पेंडिंग हेकी रहउथुवो, ताहले हमरो से दर्द टा हमरो पेन टा बढ़ी बढ़ी जाए. जो हमरो पेन टा बढ़ी बढ़ी जाए, हमरो आख पाख लोक मान को सहित कथावार्ता कम्युनिकेट कला बेले आ बिहेव कला बेले से पेन टा रिफ्लेक्ट करे. even if ame formality ପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ କରିଦବା, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ we are broken. Why we are broken or we are hurt? Why we are hurt? Because we have not been able to achieve our dream or desire, or maybe there is a delay. जदि आपण in other words, जदि आपण on the other hand, जदि आपण आपनको ड्रीम्स एंड डिजायर्स को कहउचंती आ सामना वाला आपनको हेल्प करूची, रेडी अछि हेल्प करिया को, आपनको सहित चलिवा को, as they say, it's not about the destination, it's about the journey and the person you're having the journey with. That's what really matters. एवरेस्ट ऊपर चढ़िया पताका लगे कि गोटे सेल्फी उठिया कि मु एवरेस्ट चढ़ली कहया 10 मिनिट लागिवो, गोटे हेलिकॉप्टर करिक ऊपर को जिवे, से गोटे पताका पोती देवे, हेलिकॉप्टर रु गोटे येटे कर देवे. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, बट कहीं कि लोक माने चढ़ुचंदी आ चढ़ला को मरी भी जाउचंदी. व्हाई सो मच ऑफ passion is there? Because it's not about the destination, it's about who you become through the journey. आपनकर चेंज कौन होउची ड्यूरिंग द जर्नी, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स. डेस्टिनेशन कौन कोट मिलियो. सो ठीक सेमती ड्रीम्स आउ डिजायर्स रे पहुंचीबा बहुत दरकार. आ सेटा पहुंचीबा पई जो पार्टनर आपन से तो अछि, जदि सी भलो पडियला से ड्रीम्स टा को अचीव करिया को केते खुशी लागियो, आपन को भी भल लागियो, ताकू भी भल लागियो. सो the number 5 point is please clearly communicate your dreams and desires. Top 4 को हम पढ़े इसलिए. Number 4 point communication tip to improve your relationship is both weakness and strength को communicate करिवा. Both weakness and strength. बहुत गुड़े लोको egoistic ही आंती, बहुत गुड़े लोको self centered थांती, आउ से माने गोटे macho टाइप रो देखिया को चाहती. झियो माने भी पुओ माने भी, it's not limited to only men, it's also open to women. They don't want to talk about, they don't want to be vulnerable. गोटे वर्ड अछि vulnerable, माने माने रेडी थिबा को पड़िबो कि जदी मिस्टेक हेची एडमिट करिवा, जदी वीक अछि कहि दवा, जदी स्ट्रेंथ अछि कहि दवा. एई जो क्लैरिटी ता बहुत रखिया पड़िबो. बहुत गुडे लोक तांकर वीकनेस को लुचेई दियंती, राइट. बी क्लियर, be very authentic and honest about sharing your weaknesses as well as strengths. जदि आपण सेटा करिवे, ट्रस्ट बहुत बिल्ड हबो, आ मिसकम्युनिकेशन कम हबो, आ बिलीफ ता बारंबार आसीबो. I would love to trust you, or the person would love to trust me if I am able to communicate both my failures and successes, both my weaknesses and strengths, not only just strength or success. कहिना सेटा इंप्रेशन पई हे जीवो, टेम्पररी जिंस पई हे जीवो. जदि गोटे लोको केवल टेम्पररी जिंस देखे देखे आ गोटे लोको को हासिल करिछि, खाली गोटे तार भलो जिंस उडा कोइ की हासिल करछि, जेतोबेले लव टा सॉरी जेतोबेले लाइफ टा गोटे धक्का मारिवो, सेतोबेले से निजे भी भांगी जीवो, आ से आर लोकडा भी भांगी जीवो. काहे की कहना जीवन जाक से आर लोक को आपण केवल ठीक माने केवल बेस्ट जिंस उडा कहिसंदी, जेतोबेले वर्स्ट हिट हे जीवो, से ना आपण संभाली परिवे ना सी संभाली परिवो. काहे की कहना आपण गोटे शो ऑफ करिकी केवल आपणकर आईफोन, आईपैड, मैक कंप्यूटर,
कार मु पिला दिने माने छोटो कम एज रे मध्ये मु गाड़ी चले दउची मु अमुक कर दउची मो पाखरे बाइसेप्स अछि अमुक अछि ढमुक अछि मु जमी किन देली एई सब जो शो ऑफ करी कि जदी गोटे लोको गोटे झियो को किंबा गोटे पुओ को आमे बसीभूत करिकी रखिया चाहूचे किंबा इम्प्रेस करिया रखिया चाहूचे किंबा भाबुचे कि दैट इज लव दैट इज एब्सोल्युटली नॉट लव बेसिकली यू गाइज आर फ्लाइंग यू आर नॉट इन डेप्थ सांगे सांगे उड़ी पळेबे राइट एबे भी उडुचंदी आगु भी उड़ीबे सो रिलेशनशिप रे डेप्थ आणंतु वल्नरेबल हुअंतु इंट्रोवर्ट न होई कि एक्सप्रेस करंतु निजर वीकनेसेस एज वेल एज निजर स्ट्रेंथ्स राइट so is it making sense if you got number 4 type got 4 आमे टॉप 3 रीजंस को वर्तमान पळे आसले कम्युनिकेशन टिप्स को बहुत बहुत इंपोर्टेंट नंबर 1 पर्पस नंबर 2 वैल्यू सिस्टम एंड नंबर 3 बिलीफ सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स एटा होची सब किछि जदि एटा नाही ताहले किछि नाही आपणको लाइफ रो कोन पर्पस अछि आपणको लाइफ रे का को जिंस को आपण सबटु बेसी वैल्यू दोचंती किंबा प्रायोरिटी दोचंती आउ आपणकर बिलीफ सिस्टम पिला दिनु ए पर्यंत जो बिलीफ सिस्टम अछि किबा आपण को जिनिस आपनको लागुची कि इमिति हेथिले इमिति हेथिवो सेही जिंस उडा को क्लियरली कम्युनिकेट करंतु आउ अन्य लोको जा से तो आपण अछंती रिलेशनशिप रे तार बिलीफ सिस्टम ता सीए का को प्रायोरिटी दोची लाइफ रे तार वैल्यू सिस्टम आउ तार लाइफ रे कोन पर्पस अछि सेडा को जानिया को चेष्टा करंतु बिकॉज एगुडा को एते कोर रे थाए माने एते हृदय भितरे थाए एडा होची माने माने मु कोन कहबी माने एडा होची मैग्नेट टा द रियल कोर जदि आउ बहुत जन लोक 9 आउट ऑफ 10 पीपल डोंट इवन रियलाइज कि दिस इज व्हाट मेक्स देम मूव इन लाइफ दिस इज व्हाट दीज थ्री will make you achieve things in your life these three things if you fail in your life जदि फेलियर हला तले एई तीनटा जिंस आपन को आउथरे बैक ऑन ट्रैक नै कि आसीबो 9 out of 10 people don't realize this I hope you understand what I'm trying to say आपन को लाइफ रो पर्पस आपन को लाइफ रो का को प्रायोरिटी को जिंस को प्रायोरिटी दोचंती आ आपन को बिलीफ सिस्टम कोन चाहे सेटा कोन से भी बिलीफ सिस्टम हो सेटा रिलीजन उपरे हो सेटा साइंस उपरे हो सेटा पैटर्न्स उपरे हो लोक मानकर पैटर्न्स उपरे हो सोसाइटी उपरे हो जहां भी आपनकर बिलीफ सिस्टम अछि सेटा जेते ओपनली आपन कम्युनिकेट करिवे आउ आपन ओपन अछंती फ्लेक्सिबल हेवा को बीइंग फ्लेक्सिबल इन योर बिलीफ सिस्टम सेते ही आपनकर रिलेशनशिप टा बोबाल हे कि रहिबो इंटैक्ट हे कि रहिबो I hope this was really helpful to you everybody जदि हमने जदि क्विक समरी ओटे नेबा आपन को स्क्रीनशॉट नेबा को देबी वर्तमान what are the top 10 tips to improve your personal relationship using the power of communication communicate your belief system communicate about your value system communicate about your purpose of life always communicate your weaknesses and strengths both of them communicate your dreams and desires very clearly attentively listen to the person respond to the person always seek clarity don't stay confused be patient to consider the situation of the other person and finally first and foremost let go of your past trauma don't judge the other person because of your past and don't let the person judge you because of his or her past be clear that you can start something new not past but present and future so if you want to take a screenshot of this 10 evergreen communication principles in personal relationships please go ahead take a screenshot it will help you throughout your life okay 3 2 1 thank you so much for being here if this was a really helpful session type helpful in the comments and I would also like to request you to support our content for ODIs to improve their communication skills by subscribing and liking this video
subscribing to our channel, and don't forget to hit the bell icon kaina jebe bi ame live jibu बहुत जन लोग सब्सक्राइब तो कर दियंती कि सब्सक्राइब साइड रे गोटे गोटे बेल आइकन थाए से बेल आइकन टाको क्लिक करिकी ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करंतु सो दैट आमे जेबे भी लाइव जीवु आपण माने हम सहित जुड़ित होई परिबे. And last but not the least, and most important, actually, I can say that if you are a working professional or business professional who is serious to improve communication skills, then please go ahead and check the link in this video description. Amaro 3 din live class हुए मासको दिथर 99 rupees ro. You can join there and you can learn more about improving professional communication skills. Thank you so much, everybody. Have a fantastic weekend ahead. I will see you in the next live session.